Hi, Hello. Monica. Hi, Suyash. Audio is fine? Yes, yes, the video is fine too. Okay, So let's start with your interview. sure. Give us an introduction and what have you converted this year? Okay, so my graduation, I did it in BTech with CSE, and my percentile or CGPA was 8.28 out of 10. And my 10th was 10 CGPA. And in 12th, I took science stream, and just my score was 93%. So Okay. this was my academic background, and apart from it, extracurricular, I was involved, be it basketball and other societies. Hmm. And I also have a work ex of 18 months with me. So yes, this is and calls जहाँ से मुझे आई थी that was through CAT. It was IM CAP calls and MDI, IIT Kharagpur and some tier 3 colleges like GLIM, TAPMI, GIM, you know. And another major call for me was NMIMS, which I've converted. So yeah. Okay, great. So how did you decide that you wanted to go on this route of MBA journey? So MBA happened to me in many different ways. Like being an engineer, इतना ज़्यादा sought after रहता है कि you can go into coding and many different stuff. But what I found that मेरे college के बाद मेरे आगे I have 40 years straight ahead of me. And at that time, I wasn't sure if I'm into coding and other engineering stuff. So I was very much involved in my college societies and different areas, be it committees. So वहां से पता चला that yes, I do have some leadership skills and I wanted to hone out on them. And so that's why I thought ki I should give MBA a try. So this is how MBA happened. And Okay, MBA ke baad, the first option that you see is CAT and before that CAT prep. So this yeah, is how. yeah. So when was the time that you started with your CAT preparation? So I'll give you a backstory behind it. Like I got converts this year, but 2020, the year when COVID hit us. So उस time पे I started my CAT prep, and we got this good bandwidth because of the lockdown. So Yeah, I always used to believe that it's blessing in disguise. So because we used to get so much time, so much bandwidth, आपके college नहीं जाना आपको you have. So I started my prep at that time, but the last 3 months that I was not that well with my health, so kind of okay, it affected my CAT score also. So it ended up being in the range of 85, 86. So that time I decided that let's wait for a year and let's get some work experience, some ground reality, how corporate works and everything. So 1 year dedicatedly, I was there with my company. Then side by side, I started my CAD prep from January 2022. Right. So January 2022 22. was the time when I started my CAD prep, and I started it from one coaching institute. वहाँ से I started building on my basics. But one thing that was clear that I have heard of EG. I've seen the LRDI playlist by Gaurav sir, and I don't remember the exact count, but I think 100 plus videos were there. And आप YouTube पे go check KLRDI playlist, LRDI question. That's the first thing that comes. So वहाँ से पता चला and the teaching methodology. Even though YouTube is a free platform, but still he was putting so much effort, making people aware and Yeah. telling them those short tricks. So that was the thing that hooked me up to him. And तो वहाँ से then I joined the booster course with EG. So this is how I started my CAT and how I shaped it. Yeah. So, before booster course, you had already got done with your basics. Right, And, right, and the booster course starts around August. right. So So, इसके पीछे भी I'm sorry I'm cutting you, but behind this there's one more story that जब मैं पिछले साल prepare कर रहा था CAT के लिए, so I came to know that something booster course is there, hmm, LRDI and cons का through Elite's grade. But that time वो थोड़ा सा मेरा health का issue चल रहा था उस time पे, तो I wasn't able to dedicate myself. So next year, I think around May end or June, I was constantly in touch with Gaurav sir कि sir कब launch हो रहा है booster course, when can I enroll, and please do let me know. I want to be the जैसे ही I want to be I want to know कब वो launch हो रहा है and I want to enroll in it. So sir कहते रुको रुको आ रहा है don't worry September hmm, में आएगा August में आएगा. Eventually it hmm, came out in August and I think I was the first ones like जिसने join करा because I was very eager. मुझे पता था कि मेरे basics हो चुके हैं. But from a certain stair, if I have to reach out to the next level, I have to hmm, take this course. hmm, And it turned out like that only. And hmm. I not at all regret. Even I am like, one of the best things that happened in my CAT preparation was Hmm. that course.
Okay, okay. So why did you think that you wanted booster course? Because around the same time the third batch also starts, and you Right. have been in touch with how EG starts with their courses. So why did you think that you wanted a booster course as well? So, in the time at the during the time of April and May, there was a bit more pressure on me from my office end, and there were many commitments that I had to fulfill. And this was something I have in my hand. Cat was something that's going to happen in November. Yeah. So that's why I had to fulfill those commitments. तो मैं पूरे बैच के लिए उतना प्रिपेयर नहीं था उस समय. Also, I knew that I am covered with my basics. And Mhm. booster batch का जो USP है, जो उसकी खासियत है कि वो आपने जहाँ से चीजें छोड़ी हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि ओके दिस इज द एपिटोम ऑफ कैट प्रिपरेशन, वहां Yeah, से ऊपर आपको स्टार्ट करता है. yeah. एंड कि दीज आर द क्वेश्चंस दैट कम मोस्ट ऑफन, यू हैव Mhm. टू बी प्रिपेयर फॉर देम. सो Mhm. इसलिए मेरा क्लियर था कि बूस्टर कोर्स थोड़ा सा फास्ट फुल फ्लेज में मेरी तैयारी हो पाएगी. जो मैं कर चुका हूँ उसमें मुझे उससे Mhm. आगे से करना है. मेनी टॉपिक्स वर देयर बिकॉज आई वाज ऑलवेज स्केयर ऑफ ज्योमेट्री, Okay. and it used to haunt me. Like simple questions only, like basic questions आगे वो बन गए, but जो एक क्लिक करने वाले क्वेश्चंस होते थे, डायग्राम देख के पता चल जाए ओके इसमें ये थ्योरम लग रहा है, उसमें वहां जा रहा है. So that was something I used to lack. I was good with arithmetic and algebra, but Mhm. geometry, like it makes a great portion of your CAT or other Yeah, OMATs exam also. So yeah. you cannot neglect it. So Yes. already I was not that good in PNC and probability, but thanks to booster course वो भी हो गया था. So Mhm. that's when I joined the course. So I think geometry was the topic जो एक क्लास बाद मेरा सॉर्ट हो गया. एंड आई मेड नोट्स आउट ऑफ इट. एंड मुझे पता था मैं कौन से क्वेश्चंस में फंस रहा हूँ. मैं बस उनमें गया वापस, बीट प्रीवियस ईयर्स एंड ऑल, एंड दे वर इजी टू डू. लाइक एज एन लाइक कॉन्सेप्ट समझ आया कि ओके यहाँ से स्टार्ट करना है. दीज वर द Mhm. अप्रोचेस दैट यू आर नॉट सपोज टू डू, एंड Mhm. दीज माइट वेस्ट योर टाइम. And CAT is all Mhm. about how you handle the pressure and time. Okay. And that's what I would like to judge the exam as. Like it's not that tough, but it depends on your wiseness and on your judgment कि which questions you have to select and which not. So I have to ये भी eliminate. clarity, right, which to eliminate. ये clarity भी तभी आती है when your mentor is constantly focusing on them. Yeah. जब वो आपको बार बार कह रहे हैं कि डोंट फोकस ऑन अटेम्प्टिंग ऑल द 22, बट अगर ये आपका रीजन स्ट्रांग है तो मैक्सिमाइज वहां करो. लाइक कौन स्ट्रांग है तो कोशिश करो 18 से 19 आप करके लो विद हायर एक्यूरेसी. So these were the things that were very beneficial for me in the boost during the booster Mm. duration. Mm-hmm. Okay. And if we talk about BARC and LRDA, how were you in those two areas? BARC was coming from engineering background. It's like known that we lack a bit there. But मैंने पहले भी जब CAT का preparation करा था, one thing that was constant that you have to have that reading habit. And I don't prefer reading novels because it's a continuous, like it's continuous journey for over a single topic. And CAT is very unpredictable. You cannot know either you're getting the topics from sciences, from biology, from economics. So Yeah. इसलिए I chose different websites like Aon Essays and all. So I was reading through them, and वहां से मेरा reading थोड़ा सा strong हुआ, getting to know what the author wants to say, where are the negations, where he's opposing the flow and that. फिर थोड़ा सा उसके हर reading के बाद you have to make a summary. So Mm-hmm. this is what I used to do, and scores in the starting were around when I started for the CAT prep second time. It was around 50 percentile to 60, but at the during September it used to come up around 90 percentile. Okay. So फिर booster course में I used to like in the classes with Shahjaz sir, and तो वहाँ पे पता चलता था कि these are the things that are not very जो author खुल के नहीं कह रहा, but sometime under the context subtext है, आपको उसको ध्यान देना है, flow को ध्यान देना है, and beat para jumbles out of कॉन्टेक्स्ट. सो उस पर थोड़ा सा और वर्क करा. वो टाइम था जब प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ानी थी rather than the understanding. So yes, so this is how BARC and LRDI was. I was okay with LRDI. It was just the matter of choosing the right sets in the right frame of time. And अगर आपने कोई भी सेट गलत स्टार्ट कर दिया तो you should know when to move on. And कब नेक्स्ट सेट ले लें, इस पे अगर सवाल नहीं बन रहा इसको छोड़ो. You still have ample amount of time. Move on to them. You might break something over there. And एक सेट दो सेट आपके निकल गए. Usually what CAT does is like आप दो से ढाई सेट निकल गए anyway about 90%. So that's how I used to do it. Okay. So then moving forward, the D-Day. How was your hand? D-Day was full of surprises because my slot was second, and when I was in my on my way to the center, so I got a call from one of my friend कि pattern बदल गया है, थोड़ा सा कुछ questions इधर आ गए हैं, and
number of questions in LRDI are same, but उनका like how they are presented a bit different. So बट हनी सर ने प्रिपेयर कर दिया था कि कैट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड हम सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने टेम्परामेंट को उस लेवल पर ला सकते हैं, अपने जजमेंट्स को उतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट कैट कैन डू एनीथिंग, इट इज फेमस फॉर दैट. सो दिस वाज, बट या अब वो थोड़ा सुन के एज अ स्टूडेंट यू आर ऑन द वे, यू आर लोकेटिंग द सेंटर एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा सा हो जाता है कि ओके कुछ हुआ होगा, बट इफ इट्स फॉर मी इट्स फॉर एवरीवन. So जितने भी aspirants बैठे, it's new for everyone. So VRC went quite well. I was like, okay, like one of those mocks. So इतना tough नहीं था VRC for me. But LRDI, when I came to it, I got confused between two three sets into what exactly is going behind them. वहाँ मेरा थोड़ा सा पेस लूज हुआ एंड वहां से फिर वो टेंशन बिल्डअप स्टार्ट हुआ, बिकॉज दैट्स अ डी डे, इट्स नॉट अ मॉक कि आप उसको वापस से गो अप कर लोगे, इट्स समथिंग जिससे आपका पूरा नेक्स्ट ईयर डिपेंडेंट है. सो थोड़ा सा टेंशन बिल्डअप हुआ, बट देन कॉन्स केम एंड काफी क्वेश्चंस थे, लाइक विद इन अ मिनट दे वर हैपनिंग, बट मेनी क्वेश्चंस वर फॉर मी इट वाज ट्रिकी. थोड़ा सा मेरे लास्ट के 3-4 हफ्ते ऑफिस से काफी काम था, सो मेरा प्रैक्टिस जितना मैं चाहता था उतना नहीं हो पाया था. तो बट या आई नो दीज ऑल आर एक्सक्यूजेस. सो उस हिसाब से मेरा क्वांट्स एंड एलआरडीआई उतना मैं क्वांटिफाई नहीं कर पाया अपना जितना मैं करना चाह रहा था, बट इवेंचुअली व्हेन द रिजल्ट केम आउट इट वाज above 95 percentile bracket. So I was like, ठीक है, colleges की calls आएंगी and it's fine. Let's wait what all colleges I'll be getting and let's focus on converting them. Okay. So basing on this, you had a lot many calls. Right. Okay. And apart than this, you have given other OMATs as well since you have cleared NMIMS. So if we talk about them, please enlighten us. Sure. So NMIMS, like an NMIMS का जो conducting exam, that's NMAT. And NMIMS is the top college that you can get through NMAT. तो उसके लिए हनी सर ने हमें अक्टूबर से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था कि one thing that was very sorted for me कि हमें खुद से कुछ नहीं सोचना था. He was there for us. He used to make the timetable, everything for the batch, ताकि आपका दिमाग कहीं इधर उधर ना जाए कि मैं पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा आज क्या करना है, एल्जेब्रा हो चुका है अब क्या करूं, कितनी बार एल्जेब्रा. He was there for that. You just had to follow, had to attend the classes. कभी कभी लाइव नहीं हो पा रही, आप जाओ 2x पे देखो. सो आपका सारी चीजें सॉर्टेड थी. तो ही एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड, ही एग्जैक्टली टोल्ड मी ऑन विच डेट शुड आई गिव माय NMAT exam. And I was like, okay, I know you are a teacher, you're there for the students, but इतना कौन करता है that you're telling the dates कि आप इस समय दो, so इसके बाद आपकी mentality, you still have 1 month for CAT after this. So so he told me that 26 से 28 अक्टूबर के बीच देना, like to the whole batch. And काफी लोगों ने फिर उसी टाइम दिया and I gave my exam on 20th of October. And one thing was like उस टाइम पे I chose the date, but it was like in Delhi, the seasonal changes occurs in the weather. So वो फ्लू मेरे को हिट हुआ उस टाइम पे, एंड ड्यूरिंग द एग्जाम आई वाज जस्ट वरीड कि मेरे को एंट्री मिलेगी या नहीं, बिकॉज आई वाज बिट ऑन फीवर, राइट, एंड दैट चेकअप्स एंड ऑल दैट हैपेंस. आई वाज बिट डाइसी की यार पढ़ाई वढ़ाई करी, एंट्री मिले या ना मिले. सो लकीली हो गया, एंड आई रिमेंबर आई हैड अ डोलो 650 विद मी ड्यूरिंग द एग्जाम. बाय चांस कुछ लगा तो आई डू इट, बट थोड़ी स्ट्रैटेजी सॉर्टेड थी एंड सर ने बताया था कब कौन सा मॉक लगाना है एंड उसका एनालिसिस कब होगा, तो आप सब क्लियर हो कि आज अगर मैंने ये करा एंड आई एम नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, तो अभी थोड़ी देर में एनालिसिस आ जाएगा, तो यू कैन एक्चुअली सी वेयर यू वर लैगिंग, वेयर वाज दोस हॉल्ट पॉइंट्स फॉर यू. सो उस तरह मैंने मॉक्स लगाए. कुछ टाइम बाद पता चला कि पूरे मॉक्स से ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल सेक्शनल्स हो रहे हैं, बिकॉज आई वाज एबल टू स्कोर गुड इन क्वांट्स एंड एलआर. बीआरसी में थोड़ा और मैं बढ़ाना चाह रहा था, सो दैट्स व्हाट आई डिड. एंड सर टोल्ड अस कि आपको 10 मॉक्स दे देंगे हम, आप कर लेना. इवेंचुअली एंडेड अप गिविंग 18-20 मॉक्स. सो मैंने कहा थोड़ा गलत बोला सर, आपने ज्यादा मॉक्स दे दिया है आपने, बट अब उन्होंने दिया है, इट्स देयर ऑन योर पोर्टल. सो आई डोंट लाइक कि वो ब्रैकेट खाली हो कि ये प्रोग्रेस में नहीं है, तो मैंने फिर सारे दे दिए थे. एंड इवेंचुअली इट हेल्प, आपका टेम्परामेंट बन गया, बिकॉज आप कैट की प्रिपरेशन इज समथिंग डिफरेंट. ओमिट्स में चीजें मोर एंड लेस सेम आती हैं, बट the weightage, the time duration, the number of questions, some exam are more speed based, some exam are more knowledge based, so थोड़ा अलग हो जाता है. तो सर ने बोला था कि थोड़ा सा कैट के प्रिपरेशन से ब्रेक लो, एक हफ्ता अपने ऑफिस में छुट्टी डालो. एंड उन्होंने हमें स्टार्टिंग से बोल दिया था कि अपनी छुट्टियां बचा के रखो, घूमो फिरो नहीं, लास्ट में बहुत काम आएंगे. सो कैट के 1.5 हफ्ता पहले आई वाज ऑन लीव, एंड एनमैट के भी 1 हफ्ता पहले आई टुक लीव फ्रॉम माय ऑफिस, एंड इट हेल्प because then it helps you get into the zone कि okay, exam is gonna come and थोड़ा सा बाहर का noise it cancels off and you focus on it. So NMAT, I gave my strategy was that I chose LRDI
quants, and then verbal. So this is how I went through, and it worked fine for me. But it is actually an adaptive exam. It's one of a kind, because Baki exams are not adaptive. Adaptive means like if you're giving the right answers to the question, difficulty level will increase, and if you're not able to give, it will come down. Like वो आपके लेवल पे लाके क्वेश्चंस भेजना शुरू करेगा. थोड़ा सा उसको समझना कि जैसे हनी सर ने बोला, हर सेक्शन के स्टार्टिंग 5 to 8 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेंस योर लेवल, इट सेंस कि आप कहाँ तक रीच कर सकते हो. वो क्वेश्चंस आप सही से करो, सो आपका जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस फिर आगे जाके आएंगे. आप स्टार्टिंग के कर लो तो आपका एक परसेंटाइल अप की तरफ रहता है. So this is what I focused on. Speed was never a matter for me NM के लिए, because मेरा paper usually mocks works भी half an hour पहले हो जाते थे. I used to have that time. So this is how I went to, and one of the good things about NMAT is कि score एकदम सामने बता देता है कि this is what you have done in your past 2 hours. Yes. So I was expecting somewhere कि यार 235-40 cross हो जाए and वो NM का call आ जाए, because first exam है, no one wants to end it on a lower note. सबको चाहिए कि अच्छा आ जाए. And luckily I saw my score was 261. So पहले मैंने कंफर्म करा, इज दिस माइन ओनली, इज दिस सम रैंडम स्कोर वो दिखा रहे हैं कि ऐसा आएगा. मैंने नाम वाम पढ़ा, इट वाज माइन, सो आई वाज वेरी हैप्पी. एंड आई वाज कि चलो, एंड फिर आई चेक ऑल द सेक्शंस आर क्लियर्ड और नॉट. दे वर क्लियर. सो according to past trends. So when I came out of my center, first call I gave to Hani sir कि सर इतना इतना स्कोर बना है, ये हो गया ऐसे. तो कहते ठीक है, अच्छा है, कॉल आ जाएगा, आ जाओ वापस कैट पे. So this was the thing. This was the so it's right. तो इस तरह से NMAT हुआ मेरा. एंड उसके बाद से थोड़ा सा रहा कि ठीक है, एक कॉल आ सकती है, अब आगे जितने भी उनको क्वांटिफाई करते हैं. अदर ओमेट्स दैट आई गेव वाज IIFT, बट IIFT में देयर वाज वन सेक्शन व्हिच हॉन्ट्स मी टिल डेट, इट्स GK. सो वो क्लियर करना जरूरी है. मेरा वहां पे लैक हो गया, तो उस वजह से मेरा IIFT क्रैक नहीं हो पाया. सो these are all the exams that I've given. So, coming back to NMAT, since you have such a huge score, a lot of people who are going to be watching, they will have questions. So, exam with you have scored really well. But when you were also giving mocks, वहाँ क्या range रहता था? Starting from your first mock and your last mock. Okay. So, first mock, मैंने ये देखा है, when you give something very chill, okay, like ठीक है, देखा जाएगा, पहला mock and all, वहाँ मेरे स्कोर हमेशा अच्छे आते थे. एंड जैसे मैंने NMAT का भी, बिकॉज मैंने उससे पहले उसका पैटर्न पढ़ा ही नहीं था, मैंने कहा लेट्स गो स्ट्रेट इनटू मॉक से ही सीखता हूँ क्या है क्या नहीं. माय फर्स्ट स्कोर वाज 245 एंड आई वाज अंडर द इम्प्रेशन अरे आसान है, हो जाएगा, लाइक 245 बिना देखे आ गया. बट इट्स नॉट लाइक दैट. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द एग्जाम कि वो क्या पूछ रहा है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, VARC में क्या आ रहा है, मोर ऑन योर लॉजिकल साइड VARC आता था. इट्स नॉट मोस्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा पैटर्न अलग है. तो देन यू कम and take tension कि ये सब्जेक्ट नहीं हो, ये हो गया वो. तो इट रिफ्लेक्टेड ऑन अदर मॉक्स आल्सो. ठीक है, जो मैंने मॉक्स दिए, फिर स्कोर सीधा आया 180. एंड आई वाज लाइक इसमें तो NM नीचे वालों का कॉल भी नहीं आएगा. सो फिर उस हिसाब से सर ने बोला था कि 2 हफ्ता आप ब्रेक लो. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय DILR. जो टॉपिक्स मैंने नहीं करे थे, लाइक ब्लड रिलेशंस, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, डायरेक्शंस, एंड दे वर इजी टॉपिक्स बिकॉज कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपको वो सेंस रहता है कि क्वेश्चन आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है. बट एक स्टेप होता है कि आप वही 2 मिनट का चीज को 1 मिनट में कैसे कर दो. सो दैट इज वन. सो उसमें आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन क्वांट्स में. देयर वर मेनी टॉपिक्स जो तब तक मैंने कैट के लिए प्रिपेयर नहीं करे थे, लाइक PNC, प्रोबेबिलिटी एंड मॉडर्न मैथ्स के टॉपिक. आई देखिए बूस्टर कोर्स में सर जैसे कराएंगे तब मैं करूंगा उसको. एंड इतने टाइम से पढ़ रहा था, आई हैड द फिट कि सर ये वाला टॉपिक क्लियर करा देंगे एंड जाएंगे. तो लेकिन भी मैंने, सर ने 1 हफ्ते पहले क्लासेस लेना शुरू करी, OMET स्पेसिफिक, दैट वाज NMAT स्पेसिफिक. And it used to go anywhere around 5 hours, 6 hours, and you're constantly sitting. आप उस जोन में हो एंड आपको खाली टाइम नहीं मिल रहा, दैट यू आर थिंकिंग कि यार नहीं निकलेगा तो क्या होगा, इतना टफ एग्जाम आ रही है. ऑलवेज अंडर सम guidance and under some questions. These are the set of questions, prepare from them. So this helped me a lot and putting me in a perfect mind frame. And this is how I went forward. And एक दिन पहले ही मैंने अपना जो NMAT का ऑफिशियल मॉक्स आपको मिलते हैं वो मैंने दिया था, बिकॉज दे आर एग्जैक्टली द रेप्लिका जो आगे आने वाला है एडaptiveness के वे में एंड एवरीथिंग. तो मैंने वो उस समय दिया कि मैंने कहा अब देखते हैं आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. एंड दैट मॉक, एंड बिकॉज आई वाज नॉट वेल एट, वो भी मैंने ऐसे ही थोड़ा सा दिया था रुक रुक के एंड स्लो, बट स्टिल इट वाज 235 प्लस क्रॉसिंग. तो आई ठीक है, अगर यहाँ आ रहे हैं वहाँ थोड़ा सा और पुश करेंगे, थोड़ा सा और जो गलतियां हुई हैं उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे आगे जाके, तो आई थिंक आई विल बी गेटिंग दैट स्कोर.
बट स्टिल था क्योंकि एकदम एग्जाम देते स्कोर आ जाता है एंड आप सारे एनालिसिस कब सही हो जाए कब गलत हो जाए कांट से, बट इट वाज ऑन अ सेफर साइड so I was happy and this is what I did for my NMAT and yes मैंने उस टाइम पे सिर्फ वही वीडियोस देखी बीट थ्रू यूट्यूब या बीट थ्रू बूस्टर कोर्स सर जैसे 5 से 6 घंटे करा रहे हैं फिर आप अपना जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो जब मॉक्स लगा तब मैंने कैट को साइडलाइन कर दिया बिकॉज कि अब मैं काफी टाइम से कैट के लिए पढ़ रहा हूँ तो एक 1 वीक वुडंट हार्म एंड इट विल एक्चुअली मेक मी मोर स्ट्रांग व्हेन आई कम बैक टू कैट की यार अब एक एग्जाम हो चुका into the CAT because eventually that's the main exam you're preparing for. But हनी सर का गाइडेंस एंड ऑल इज लाइक कि कोई भी एग्जाम लो उसका टॉप कॉलेज निकाल लो ये सेट फॉर एंड हर एग्जाम को कैट के बाद जर्नी इज नॉट फिनिश फोकस ऑन एवरी ओमिट्स दैट आर देयर एंड मेनी पीपल आर लाइक काफी लोग होता है जर्नी के टाइम पे अगस्त में दे गिव अप कि मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा फ्लक्चुएट हो रहा है and I've seen people selling their mocks on WhatsApp कि यार I'm planning for mocks लेना तो एंड सो वहां से देख के लगता था नहीं यार दिस टेम्परामेंट आई हैव टू अवॉइड एंड आई हैव टू कीप सच पीपल क्लोज टू मी सच मेंटर्स क्लोज टू मी कि जो मेरे अंदर importance for cat was there in January, it should be all the way throughout till the omets are over. So this is what I did. And sir ने भी कहा कि सारे omets को properly दो हर केस प्रिपरेशन में स्विच करो जल्दी से एंड ऑन आपका एक पेपर बुरा गया doesn't matter. It's just a matter of one day, one good exam, one good temperament, one good mind frame, and you're for the rest of it. So these things help and motivated a lot. Okay. And after this, you must have started preparing for your interviews as well. Right. So then how did you prepare for those? So पिछली बार जब मैंने कैट दिया था जिसके भी तो उस समय इंटरव्यू वाला स्टेज नहीं आया था बिकॉज द कोर्स स्कोर वाज नॉट अप टू मार्क आई मीन आई यूज्ड टू गेट कॉल्स बट दीज आर द कॉलेज आई डिडंट वांट टू एंड अप इन एंड आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग बेटर मच बेटर सो अब जैसे ही कैट पहले लगता था यार कैट इज बहुत बड़ी चीज है एंड कैट ही देना है उसके बाद तो कॉल आ गया हो जाए बट रियलिटी चेक कम्स जब आपको इंटरव्यू प्रेप करना होता है कैट में यू हैव 3 डायरेक्शन पॉइंट्स DLR एंड VRC बीट अदर ओमेट्स इंटरव्यू के लिए यू हैव अनलिमिटेड सोर्सेज अनलिमिटेड आपका प्रोफाइल पूछा जाएगा आपका बैकग्राउंड पूछा जाएगा एनीथिंग दैट यू मेंशन इन योर दे टेल यू अबाउट योरसेल्फ और योर SOPs they are going to be checked they should be fact based they should be backed by facts you cannot say things कि मैंने ये भी करा है वो भी करा है you should have a deep knowledge about it and this is what they check so interview prep के लिए मेरे से one thing that I missed was कि I didn't know कि Elites could also launch as an interview course by that time I wasn't that aware and मैं थोड़ा सा WhatsApp and all भी कम use कर रहा था I was more on तो तब तक I joined some other coaching and वहां से I prepared and it was helpful but हनी सर का जो रोल था that he was always there I can call him I can text him कि सर इस कॉलेज का कॉल आया है इसके लिए क्या करा जाए and he has such a large database you name the college you have I think probably 50 students from that college एंड वो आपको उनसे कनेक्ट करा देते थे आप उनसे बात करो व्हाट एग्जैक्टली दैट कॉलेज वांट्स फ्रॉम अ कैंडिडेट क्या देख रहा है कैसे क्वेश्चंस आते हैं आई एम कैप राउंड्स एवरीवन नोज इट्स लाइक एक के बाद एक क्वेश्चन इट्स लाइक दैट तो फिर आपको वहां पे देखना होगा कि कुछ क्वेश्चंस कुछ इंटरव्यूज आपको आपके टेम्परामेंट पे जज करते हैं आपने अपना नर्वसनेस कितना कंट्रोल करा है दे विल ट्राई टू थ्रो यू ऑफ द बोर्ड हाउ यू स्टिक टू योर नर्व्स हाउ यू आंसर दैट कुछ क्वेश्चंस आर फायर लाइक एक के बाद रैपिड फायर सो सबका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है because they want that particular student that is suitable for them. So interview prep was very much comprehensive, newspapers, articles, business articles, because engineering background से आके इतना business का idea नहीं था थोड़ा बहुत था but उसको अपने horizon को wide करना था तो this was a good opportunity from me कि B school से पहले ही मैं अपने आप को इस तरह prepare कर लूँ that मुझे कुछ चीजें पता I'm not very naive to it so this is what I did and हर college का past trends देखना कब तक आती है इंटरव्यू कॉल सो वो टाइम काफी पावर पैक था लाइक आज इंटरव्यू कल दूसरा इंटरव्यू दूसरी शाम को दूसरा इंटरव्यू एंड इट वाज वेरी मच ऑक्यूपाइड आई वाज वेरी मच ऑक्यूपाइड बाय दैट टाइम सो बट इट वाज फन बिकॉज इवेंचुअली बी स्कूल में जाके आपको करना यही है सो इट वाज अ गुड लाइक बैकड्रॉप कि आपको आगे जाके क्या मिलने वाला है दिस इज हाउ माय इंटरव्यू वेंट and if we start talking about your interviews and firstly if you talk about NMIMS
How was your experience? And then going down the line, other interviews. Okay, so one thing that was different with NMIMS का इंटरव्यू की हमें लगा था रिजल्ट काफी पहले आएगा, रिजल्ट थोड़ा सा पीछे आया एंड रिजल्ट आते ही आई थिंक विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 1 or 2 weeks you were told that you have to give your interviews. These are the slots, select, and one major difference was this was an offline interview, as in like you have to travel to Mumbai, आपके city में नहीं हो रहा. So that was a big news to me कि मतलब प्रिपेयर भी करना है एंड इट्स अ गुड कॉलेज, बिग कॉलेज है एंड टॉप लीग में आता है, वहां जाके यू हैव टू प्रिपेयर, शो योर बेस्ट सेल्फ एंड क्या क्या कवर करूं बिकॉज एनएम का इंटरव्यूज आई थिंक मच मोर व्हाट आई फील मच मोर फोकस्ड ऑन यू, योर प्रोफाइल, दे वांट टू नो अबाउट यू. मेरे एंड जितने मेरे लोग थे उनके जीके ओरिएंटेड थोड़ा सा कम रहा था एंड इट वाज दे वांटेड टू नो यू बेटर इफ यू आर परफेक्ट फिट फॉर देम एंड इफ यू आर ओपन टू लर्न. If you're very much कि मुझे भी आता है मुझे वो भी आता है then they be feeling कि you're very stagnant, like you know things, then how can we modify you, how can we hone your skills. So these were the things. So NMAT के लिए I went to Mumbai and एक दिन पहले I reached there just to check the कैसे पहुंचना है वहाँ है ना and I was there. So there were थोड़ा सा process change हुआ था इस बार. There was one written assessment test in which you are given a topic, and I'm not sure about कितने words का था, but I think 150 to 200 words. You have to show yourself. You have to express yourself over that topic, about that topic. Ki they'll assess according to that. Then there was one Watson-Glaser test this time. Yeah. And it's a name given, fancy name for the psychometric test, but सुन के हमें लगा क्या है exactly Yeah. like. फिर जैसे हनी सर ने बताया थोड़े से उन्होंने उसके बारे में मॉक्स भी दिए थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दे बी क्वेश्चंस विल बी एक्चुअली टारगेटिंग ऑन योर पर्सनालिटी. इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे एंड जैसे मान लीजिए कि सपोज यू आर इन अ पार्टी and you find 4 of your friends who are like you were acquaintance 10 years back, will you be there going talking to them or not. वहां पे आप एक पर्सनालिटी ट्रेट दिखाइए, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, ऐसा वही क्वेश्चन कुछ टाइम बाद दूसरे सिचुएशन में आ जाएगा. लाइक आपको अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, अचानक से नया क्वेश्चन की ऑफिस में यू हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन एंड यू थिंक यू हैव अ राइट पॉइंट विद यू, बट आप वो पॉइंट लेके बोलेंगे मैनेजर के सामने नहीं. अगर आपने वहां दिखा दिया कि आप नहीं बोलेंगे, आपने यहाँ बोला कि दैट यू आर एक्सट्रोवर्ट, तो इस तरह से दे जज यू. यू हैव टू बी वेरी ट्रू टू योरसेल्फ, show them the true self yours. So this was how Watson Glaser went, and उसके बाद written assessment हुआ, and then we were told कि हमारा PI rounds होंगे, and PI round से पहले definitely that nervousness कि क्या ही पूछेंगे, and because my number was second, so मैं इतना feedback भी नहीं दे सकता था ये panel क्या पूछ रहा है, किस direction में ले जा रहा है. So if I can give you about how my interview and what, so there the first question was a bouncer to me कि the current organization that you're working me, give me two things that you like about it and two things that you don't. And I was like, how can I demean my company there? How can I say, like, you have to give your answer diplomatically, so you are not being in negative terms with the company also. Yes. And आप उनके answer को भी answer, they just want to check कि आप कितने safely उससे निकल पाते हैं. So this was the first question, and we all are prepared for tell me about yourself. And I went there, I sat, I was like, okay, पूछेंगे, tell me about yourself. But question was different. मैंने कहा ठीक है, but इतने interviews दिए, इतना mock दिया, तो idea था कि it's not on the same course of line, but mostly tell me about yourself to start with that. So I answered that. I was not prepared, but mostly what I said was on the spot, जो मुझे समझ आया. तो मैंने वहां से start करा. Then one of the questions that still scare me is last में उन्होंने पूछा नहीं, actually they said कि आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, यू वोंट ऐड एनी वैल्यू हियर, क्यों ही आ रहे हैं. एंड सब इंजीनियर्स को लगता है इंजीनियरिंग होगी अब एमबीए कर लो. आई डोंट थिंक हम आपको कुछ सिखा पाएंगे, आप हमारे को चूज आ पाएंगे ना. बट एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन हु इज बीइंग देयर इन द इंटरव्यू, आपको ये समझना पड़ेगा दैट दे जस्ट वांट टू सी कि बेसिक क्वेश्चन इज व्हाई एमबीए आफ्टर इंजीनियरिंग. आप एमबीए को कैसे बता रहे हो कि आप क्यों आना चाह रहे हो, आपने एक डिग्री तो ले ही चुकी है, देन व्हाई आर यू स्विचिंग योर कोर्स on this time frame. So you have to be with a valid reason, and it comes out of your life, and आपके एक्सपीरियंस से ही वो आंसर आएगा. काफी आंसर्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, बट जो आपको यूनिक बनाता है यू सिट यू थिंक, क्योंकि हाइजीन क्वेश्चंस होते हैं, एचआर क्वेश्चंस होते हैं, ये तो पूछे ही जाते हैं, लाइक व्हाई एमबीए and why CSC in engineering, and हम आपको क्यों ले, why you, why not the other candidate. You have to sit and give good amount of time. मैंने अपने आप को 3 से 4 दिन दिए थे इस एक्टिविटी के लिए कि मैं अपने आंसर्स प्रिपेयर करूं, फिर मैं कहीं देखूं और कैसे आंसर्स आते हैं. सो दिस वाज वन क्वेश्चन दैट वाज थ्रोन एट मी कि आप तो क्या ही करोगे यहाँ आके, आप एमटेक करो, ऐसा वाला. सो
but I kept my calm. I knew कि like this is a process of selecting the good candidates, and आपको वहाँ पे अपना cool lose करके नहीं, अब like अपना maintain करके आपको उनको आंसर देना है. So that's what I did. And then in course of I think next week or 1.5 weeks the results were out, and I was a bit confident कि हो जाना चाहिए convert. बट वो एक मार्जिन ऑफ डाउट रहता ही है कि क्या उस रिजल्ट पे वेट लिस्ट आ जाए शॉर्ट, लाइक नॉट सेलेक्टेड. इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट टू बी गुड, सो दिस इज हाउ इट वेंट. Okay, great. No, beautifully explained all your process. And if we talk about other interviews that you faced, how were they different from this NMIMS interview? Okay, so other interviews that I gave were ANCAP rounds, IIT Kharagpur, and MDI, some tier 3 like IMT. So NM one thing that I was sitting face to face. There were so many things like my body language that could be a judging criteria over there. And everyone says smile during the interview, that even if you're not getting the question right, you should keep that smile. So it gives an indication that pressure mein bhi banda calm hai. And after B school, aapka jo role hoga, you'll be facing many pressures. Even during the B school, aapka journey aisa hi rehne wala hai. So is it there in your habit? Is it naturally in you? So it shows. So this MDI ka interview was very comprehensive. It went on for 40 minutes, but it was मिक्स ऑफ बिट ऑफ जीके एंड जो उस समय करंट अफेयर्स चल रहे थे, एंड मैं उसको देखता जा रहा था. बट जीके वाज नेवर अ स्ट्रॉन्ग सूट फॉर मी, बट आई यूज्ड टू मेक नोट्स कि जैसे अभी रिसेंटली काफी चीजें हुई, देयर वाज बैंक्स दैट फेल्ड इन अमेरिका, सो यू हैड टू नो द रीजन व्हाई. लाइक ऊपर ऊपर से तो पता ही बैंक गिर गया, क्यों गिरा, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इंडिया में क्या इफेक्ट होगा, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू नो. सो इस तरह का इंटरव्यू था मेरा एमडीआई का, बिट कॉम्प्रिहेंसिव. फिर वन इंटरव्यू आईआईटी केजीपी, इट वॉज वेरी फ्रेंडली. लाइक जैसे ही मैं गया, आई वॉज बिट ऑब्वियसली हर इंटरव्यू के पहले थोड़ा सा फेज आता है, यू आर लाइक calming yourself down कि हो जाएगा हो जाएगा. But the thing was that they calmed me down, like, or Suyash ji, how are you, like. So when they use that certain terms like Suyash ji and all, you feel like okay, they're being friendly with you. Calm down, and uh, you have to be on the driver's seat of your interview. Never say something that you're not sure about, एंड प्लीज मेंशन ऑल दोज थिंग्स जिसको अगर उन्होंने री-क्वेश्चन करा तो आप उसको आगे ले जा सको. सो दिस इज वन थिंग दैट आई was taking care of कि because I was in basketball, I was in many college societies. So उसके पीछे questions आएंगे, अभी बास्केटबॉल में क्या चल रहा है, कल मैच कौन सा था, स्कोर क्या था. These questions were asked to me, and अब बास्केटबॉल बोले तो मतलब मैं देखता हूँ, this is their first impression, so they can ask you anything. There was one interview, XIMB. It was very grilling for me, and I mentioned that I used to play games back then when I was in my 10th. वहां से मुझे science की तरफ आया and computer science. They were okay. Tell me who was the founder or who made Call of Duty the game. And I wasn't prepared for this because that was something जो आप interview से सीखते हो कि यहाँ से भी they can frame questions, but you have to be calm. Sorry sir, I'm not aware of this, but I'll definitely give it a read afterwards. And you have to show your interest कि ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता तो मैं वापस सीखूंगा भी नहीं. You have to show learning capacity in you. So this is how other went. CAP was a very rapid fire. ये ऐसा है वो ऐसा है, and it was very much regarding my place, like native place Delhi. मेट्रो के ऊपर आपके क्या व्यूज हैं, ईवीज कितने आगे जाएंगे एंड सस्टेनेबल है या नहीं है, इज इंडिया यू नो working in the right direction. So these were the questions. You have to have the habit कि आप अपने opinions बनाओ, आप किसी और के opinions मत दो. You have to be clear कि जैसे कि अभी अडानी केस हुआ था, you have to be clear कि आपका opinion क्या है. You cannot say कि नहीं सर अभी तो opinion form नहीं हुआ, बाद में हो जाएगा. You have to be well read. You have to be well informed what's happening around you. This is what is different in interviews. CAT is आपको सारे questions practice करने हैं, आपको अलग अलग varieties जाना है, आपको जो आपके स्ट्रॉन्ग सूट है उसको बार बार करिए ताकि आप उसके टफ क्वेश्चंस को भी हैंडल कर ले, जल्दी कर ले, तो आप दूसरे टॉपिक्स जो आपको नहीं पता उसको आप हैंडल कर पाए इजीली. बट इंटरव्यू इज अ डिफरेंट गेम एंड उसमें एक्सेल करने के डिफरेंट स्किल्स. Of course, you have to prepare wholesome. आपके कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, जैसे आपने बताया, from your sport, from your past accounts, from your work experience, from current, any and everything. So you have to prepare in that direction. बिल्कुल बिल्कुल. Yeah.
And and we are so thankful that you came here and you explained the journey. NMIMS का जो आपका experience था, the interview experience, you explained really beautifully all the insights you've given. And I don't think a person goes through this video, he or she would have any more questions, because you have thoroughly answered each and everything, whatever you had any doubts about. So yeah, thank you so much, and we wish you all the very best. Thank you. And all these things come through the mentors that you have, actually, because mentioning Hani sir, Gaurav sir here, because अगर आप देखा जाए तो एक टीचर और मेंटर में यही फर्क है। टीचर आपको चीजें पढ़ा के चला जाएगा, बट मेंटर आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर करेगा कि इफ दिस इज वन डोमेन, उसके अलग चीजें क्या आ जाती हैं। इंटरव्यू में आपको नहीं छोड़ेगा, दे विल बी गिविंग यू सम कॉन्टैक्ट्स कि आप बात कर ले। सो व्हेन यू लुक एट पीपल लाइक देम, इट काइंडली कम्स inside you also that अभी जैसे मैं निकला, there are many aspirants who are sitting right now, वो ईजी के स्टूडेंट होंगे, वो किसी और कोचिंग के स्टूडेंट होंगे, बट दे विल बी गोइंग थ्रू ऑल दिस एंड क्वेश्चंस आएंगे। मेरे को भी बहुत आए थे। आई वाज ग्लैड आई हैड हनी सर एंड गौरव सर एंड जो स्टूडेंट्स जिनसे उन्होंने कनेक्ट करवाया, आई हैड देम। सो these things I feel it's kind of a legacy. When you see these things happening to you, you are eventually able to give it to others also. So it's just a legacy that's happening. So yes. I get it. A lot of people, students who are going to have similar questions, because since you also said that you were preparing for CAT, and CAT didn't go that well. You scored around 95 plus, but then this one exam you had NMAT and you really aced it, and you have banked a good college. So yeah, you just need one good day, one good exam, and one good college, and that's about it. Right. So अब आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कोचिंग में। बूस्टर कोर्स वाज लाइक कि you start missing after जैसे ही मेरा CAT and OMITs खत्म, I was like अब क्या, like वो एक खाली दिन and there's a void. Yeah, there's a void. Then sir के lectures like we'll start in 5 minutes and then you're sitting patiently just 5 minutes, से फिर सर पढ़ाना शुरू करे, बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, like questions आ रहे हैं, सर ये सर कह रहे हैं मैं कमेंट्स बंद कर रहा हूँ, मैं सब पढ़ा दूंगा, 2 घंटे मुझे दो। एंड उसके बाद किसी का क्वेश्चन आता नहीं था बिकॉज सर कर देते थे। राइट, स्टार्टिंग में रहता है सर ये भी पढ़ा दो, परसेंटेजेस का पढ़ेंगे, रेशियो की क्लासेस का, बट इट्स जस्ट लाइक यू स्टे काम, लिसन टू हिम, दिस इज योर फर्स्ट कैट, बट उनका आई थिंक 20th बैच होगा जिसको वो पार करा रहे हैं। सो जस्ट बिलीव इन हिम एंड बिलीव इन योर मेंटर्स एंड वो करा देंगे जो कह रहे हैं। आपको टाइम टेबल मिल रहा है, टाइम टेबल सो कॉम्प्रिहेंसिव, आज ये चैप्टर करो, इसकी वीडियो रिवाइज कर लो। एंड आई थिंक एग्जाम से पहले एनीवेयर क्लोज अराउंड 17 to 20 टाइम्स हमारा रिवीजन हुआ था। सो ज्यादा ही हो गया था, मुझे लग रहा है। मेरे सपने में हॉर्न्स आते थे, लाइक ड्रीम्स में, कि सर पढ़ा रहे हो ज्योमेट्री के वॉइस रिकॉर्डिंग्स तक भेज दिए सर ने, इवन इफ इन मेट्रो, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इफ अ मेंटर इज पुटिंग दैट एफर्ट, आई मीन लाइक यू जस्ट पुट हाफ ऑफ इट, यू डन, उससे आगे कैट आता ही नहीं है। सो कैट और अदर ओमिट्स आल्सो, so it's one comprehensive place. You come here and just leave yourself to them and get you. But हाँ, वो passion आपका वो होना चाहिए, vision. Yes. मुझे ये करना है, and there will be many distractions also. You have to deal with it, and distraction basically कम हो जाती है क्योंकि सब टाइम टेबल और सब कुछ आपको दे ही देता है। आपको तो ओवरलोड कर देते हैं, लाइक इतने रिसोर्सेज आपके पास, you cannot think of anything else then. Once you come to EG, all you have to do is listen to sir, whatever the resources he's providing, whatever timetable he's giving, you just have to follow that, have faith in him, and do your hard work. And the rest, as students like you, they're going to come up with. Hard work तो सर ही कर देते हैं, actually आपको follow करना है hard. And it's like EG, like it's a saying goes in the groups and everything, EG makes it easy. So I felt it, and starting में मुझे लगा कि EG के साथ easy जा रहा है तो it's a line, but it's actually it makes it easy. एंड आपके लिए काफी चीजें सॉर्टेड आउट है, आपको सोचना ही नहीं है फिर, क्योंकि दिस हैपेंस, आई हैव सीन इट हैपन विद मी आल्सो। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, यू आर वरीड अबाउट योर इंटरव्यूज, यू आर इन योर इंटरव्यूज वरीड अबाउट यार कैट में स्कोर इतना रह गया, ये एनएम में इतना रह गया, सिलेक्शन हो गए नहीं। तो वन थिंग दैट आई विल टेल एवरीवन, एंड इट्स बिट इंपॉर्टेंट, कि एस वन थिंग एट अ टाइम. If you're preparing for CAT, if your NMAT exam is next day, if you're over a course of months your SNAP or ZAT are coming, focus on them. Don't worry कि आपकी प्रोफाइल कैसी है और वो सारे, these are your goods or your sins of your past. You cannot change them. This is your journey. It's just how you fabricate them, how you show them into an interview. And CAT में आप 99.99 ले आओ, no college will be denying you to take. And interviews में आपकी अलग प्रिपरेशन रहेगी. Then don't worry कि यार CAT में इतने आ गए, NMAT में इतने आ गए. Then just focus on an interview and ace one step at a time, and you'll be there. It's just like stair. Climb one step at a time, and eventually you'll be reaching your dream B school. That's like what I like to say in the end. So
Yes, I'm sure the aspirants who are going to watch this video, if and they think that this is the advice they want to take, and if they take it by heart, I'm sure they will also come out with flying colors. And I hope, thank you. Thank Yeah. you, Monica, for having me too. And I Thank hope you, this helps. Suyash. Yes, it will definitely help. And thank you so much for taking out the time and helping out the students so much and telling them your experience. It has been great having you. Yeah, same here. Thank you so much. Yeah. Good luck. Okay, good luck. Yeah, Yeah. bye-bye. Bye.